Hi guys, my name is Vaibhav Munjal and today I'm going to recommend three films which are related to electronic slash ambient music. The first recommendation that I have for the week is a documentary which is called Avicii True Stories. This came out in 2017 and this is based on the life of electronic artist Avicii. आपने अवीची के बारे में सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आपने इनके गाने ज़रूर सुने होंगे. Two songs in particular, Wake Me Up and Levels, like those songs are very very famous. It's like a very heartbreaking story and so is the documentary because Avicii actually died recently and he died at the age of 28. But उन्होंने अपनी छोटी सी लाइफ में काफ़ी सक्सेस देखी थी एंड ही स्टार्टेड मेकिंग म्यूज़िक एट द एज ऑफ 12 एंड बाय द एज ऑफ 17 वो खुद के गाने कंपोज कर रहे थे एंड ही ऑल्सो फाउंड अ मैनेजर बाय द एज ऑफ 19. सो इनके जो मैनेजर थे लाइक ही वॉज लाइक अ वेरी एम्बिशियस गाय हु सेड कि आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. वो अवीची को बताते थे कि ये कर और लाइक कीप डूइंग गिग्स, जहाँ पे भी कॉन्सर्ट हो रहा है जा, क्लब्स में जा, हर जगह कर, आई विल गेट यू लाइक एंट्री टू लाइक क्लब्स वेर एवर आई कैन. सो ही काइंड ऑफ हेल्ड अवीची ग्रो. आई थिंक जब अवीची का पहला गाना आ रहा था, आई थिंक इट वॉज लेवल्स और वेक मी अप. सो बिफोर इवन द रिलीज ऑफ द सॉन्ग द मैनेजर हैज सेड दिस सॉन्ग विल चेंज एवरीथिंग एंड इसके बाद तू अलग लेवल पे चला जाएगा. इवन अवीची कुड ऑल्सो फील दैट एंड वेन दैट सॉन्ग रिलीज्ड एंड एक्चुअली दैट हैपेंड. द सैड पार्ट इज दैट अवीची वॉज डूइंग सो मेनी कॉन्सर्ट्स दैट ही वॉज नॉट एबल टू टेक गुड केयर ऑफ हिज हेल्थ. एवरी वीक ही वॉज डूइंग लाइक 3 कॉन्सर्ट्स और साइड में एक ना नंबर चल रहा होता है एज यू सी द मूवी एंड लाइक मोन्टाज शॉट्स है कि एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी से तीसरी जगह जा रहा है एंड नंबर कीप्स इंक्रीजिंग लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 60, 100, 200, 300. एंड जो उन्होंने छोटी सी लाइफ जी अपनी और 25 साल की एज तक जब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक क्रिएट किया था और जब बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए थे, लाइक इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल. बट in like 6 or 7 years he did around 800 live concerts. 800 आप मतलब इमेजिन करके देखो, वो अपनी लाइफ के मतलब 2-2.5 साल के अराउंड उन्होंने सिर्फ लाइक ही डिड लाइव कॉन्सर्ट्स एंड इट गॉट टू हिम एंड आफ्टर लाइक पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक उनको मतलब उसकी फैसिनेशन ख़त्म हो गई थी एंड ही इज़ लाइक कि आई वोंट बी एबल टू डू इट. बट व्हेन ही यूज्ड टू से कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा, उसके साथ वाले सुनते नहीं थे एंड दोज पीपल वर लाइक कि यार कर ना, मतलब बिकॉज उसकी जो अपर मैनेजमेंट थी ना उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था. एंड अवीची आगे लाइक आई सेड ही वॉज एक्चुअली द मोस्ट फेमस इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट. लाइक आप मान लो 2011 से 2014 टाइप्स वाले सालों में एवरी, और वो मतलब बड़े बड़े जो गिग्स होते थे अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह वहाँ पे ओपन कर रहा था. बट हिज हेल्थ वॉज सफरिंग एंड उनको एट द एज ऑफ 22 पैंक्रियाइटिस हो गया था. सो ऐसा होता था कि शाम को अवीची की गिग है और दिन में ही इज़ इन दी हॉस्पिटल बट ही इज स्टिल गोइंग टू परफॉर्म बिकॉज कैंसिल भी नहीं आप कर सकते क्योंकि लाइक पूरा का पूरा फेस्टिवल अवीची के नाम पे चल रहा था. ही वांटेड टू कैंसिल बट अपर मैनेजमेंट वाले लोगों ने एंड हिज मैनेजर दे वर लाइक कि मत कर कैंसिल बिकॉज योर इमेज विल लाइक गेट लाइक टार्निश्ड एंड लाइक यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी इन योर. But like it got to him, like he trying to work on his health because at one point of time he started consuming alcohol also. But Avicii True Story is basically the story of a guy who is like an introvert and who is struggling with all the fame and success and he just wants to be on his own but उसके आसपास कोई सुन नहीं रहा because since he is a success everyone wants him to be more successful so that they can earn more money and he did not have any true friend. एक point पे ना he retired from like everything and he's like कि मैं और gigs नहीं करूँगा. but उसके बाद भी उनके पास 1 महीने की commitment थी कि यार वो जाके करना था एंड ही इज़ लाइक कि मैं नहीं कर सकता बट लोग बिना उसको बताए उसकी गिग्स बुक कर रहे थे. एंड एक टाइम भी लॉस्ट इट, व्हाट द फक, लाइक क्यों कर रहे हो यार, मैं नहीं कर सकता, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे को एनजाइटी होती है. एंड ही कीप्स टॉकिंग अबाउट एनजाइटी बट नो बडी इज़ लिसनिंग एंड ही इज़ लाइक कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मे बी आई डाई वन डे और ये वो. बट इवेंचुअली उनका एक लास्ट वो होता है, एक गिग होती है और वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं. उसमें बहुत लेट जाते हैं, ही परफॉर्म्स फॉर लाइक 2 hours. एंड में ही लिखा हुआ आता है टाइटल स्लेट कि Avicii has like now retired from like doing live gigs but he's still creating music on his own and I think he's at some place in like Miami or Hawaii और वहाँ पे वो बीच के पास बैठे हैं and like he's like in a very happy space and the movie ends there, like the documentary ends there. But here's the scary part. After the release, like the US release of this documentary, 14 days after that he kills himself
एंड दैट इज़ द मोस्ट फक्ड अप पार्ट बिकॉज उसके बाद मैं अभी एक उसका लाइक द मोमेंट आई सॉ इट लाइक आई रेड वन ऑफ द इंटरव्यूज़ ऑफ लाइक द डायरेक्टर एंड ही सेड कि जो हमने एंडिंग दी है ना डॉक्यूमेंट्री में एट सम लेवल इट नाउ लुक्स सो फेक एंड सो सुपरफिशियल बिकॉज हमने इतने सारे पॉइंट्स मिस किए व्हेन ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिज एंजाइटी और हमने ये दिखाने के लिए येस लाइक एक रिडेम्पशन वाला आर्क देने के लिए हमने दिखा दिया नाउ अविची विल लाइक ही इज़ वर्किंग ऑन हिज न्यू एल्बम एंड ही विल कम आउट stronger and like sharper, but no, he kills himself and they are like कि the whole movie is now like a dark prophecy and उनको embarrassed भी फील होता है और जब मैं ये मूवी देख रहा था मेरे को लग रहा था इस मूवी में उनका डेथ वाला पार्ट दिखाएंगे बट आई डिड नॉट नो मूवी का शूट खत्म हो गया था उनकी डेथ से पहले डेथ बाद में होती है एंड लाइक इट इज़ सो क्लोज टू द रिलीज ऑफ द मूवी it's like very fucked up. So do read about it also, and like if you are into music and like stuff, like you should definitely watch it. My second recommendation for the week is a film called Eden, which came out in 2014. It is a movie directed by Mia Hansen-Løve. Eden is a French film about this guy called Paul who wants to be an electronic artist और ये I think 90s वाला era दिखाया है जिसमें this guy is trying to be a DJ on his own और he like partners with another DJ और वो like they give themselves a cool name और वो जाके थोड़ा बहुत perform करना चालू करते हैं and at this time he's also still studying and इसमें हमें एक और duo देखने को मिलता है Gaiman and Thomas, the guys who are actually Daft Punk. So उनका cameo है throughout the movie at various points. Like in one of the stages, the bouncer like stops two guys and they say we are Thomas and Gaiman and the bouncer is like you are not on the list. And they're like Daft Punk and like उनको entry नहीं देते like they have played around it very nicely. So I don't know what like you will like Eden that much but like again if you are passionate about like electronic music मतलब मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो I try to watch everything. हाँ इसमें like Greta Gerwig was also there just by the way and Gulshifteh Farahani is also there. So अलग अलग टाइम पे like the lead actor has a lot of love interest और एक टाइम पे वो न्यूयॉर्क भी जाता है so he falls in love with another girl and he keeps coming back to some of the girls. एक पूरा आर्क दिखाया है जिसमें he gets into cocaine and shit. And दिखाया कि he becomes like moderately successful but then he runs out of money then he's back with his mom he's like again like taking financial help from his parents. You get to see that maybe it's not very easy to become a DJ and like since in the society nobody even understands it. I think ये थोड़ा पहले का भी time दिखाया तो उस हिसाब से it becomes really tricky. And but the way they have used Daft Punk music also, there is this one very beautiful scene where the song of Daft Punk called Within plays. So this guy is at this club and this girl is playing this song by Daft Punk which is Within and it's one of the most soothing songs of Daft Punk and he's looking at her and he becomes very emotional and he's almost about to cry. So you get to see the emotional side of like and the struggle of being a DJ and like it's done beautifully. But again not very sure if you like this movie. मेरे को पसंद है क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है. I also want to recommend another documentary again. It's like related to ambient music. It's called HEMA. I hope I'm pronouncing it right. HEMA is a documentary on Sigur Rós. So in 2006 सिगुर रॉस ने आइसलैंड में अलग अलग जगहों पे अपना मतलब टूर किया था एंड हीमा एक्चुअली मीन्स एट होम. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल नेम और इनकी एल्बम्स और सॉन्ग्स के भी इतने प्यारे नाम होते हैं. सो आई डोंट नो इफ यू नो दिस अबाउट सिगुर रॉस इज अमंग दोज फ्यू बैंड्स who create their own like language to create music. So there is this language called Hopelandic और ये इन्होंने खुद लैंग्वेज बनाई है जिसमें ये अपने गाने बनाते हैं. इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक डोथराकी शिट जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में होता था बट दिस इज़ लाइक अ रियल थिंग दैट एग्जिस्ट. होपलैंडिक लैंग्वेज. सो कुछ इनके गाने आइसलैंडिक में होते हैं कुछ होपलैंडिक में होते हैं. सो दिस दिस वन सॉन्ग बाय सिगुर रॉस विच इज़ कॉल्ड हॉपी पोला. हॉपी पोला मीन्स जंपिंग इन द puddles of rain water. So there are like lot of beautiful things related to the universe of Sigur Rós. आपको इसमें जो भी बैंड मेम्बर्स हैं उनके सबके इंटरव्यूज़ भी देखने को मिलेंगे एंड लाइक दीज आर लाइक वेरी comforting personalities, especially John C who is like the lead vocalist also. सो आप जॉन्सी को बात करते हुए देखोगे इट्स वेरी कंफर्टिंग. और ये ना थोड़े से मतलब पोलाइट से लोग हैं और आइसलैंड आप अलग तरीके से देखोगे और आप मैंने तो देखो एटलीस्ट ऐसी लाइव गिग्स नहीं देखी हैं. सो हीमा आपको देखनी चाहिए. दिस इज़ ऑन द लाइटर साइड एंड द मोर सरियल एंड द मोर कंफर्टिंग साइड.
सो आप ये 3 डॉक्यूमेंट्री स्लैश फिल्म्स देखी हैं related to the universe of electronic and ambient music. So hope you like the recommendations. I'll be back with more recommendations soon. By the way, I also want to tell you something new. So Chalchitra Talks now has a paid community on YouTube also. So if you like our work, you can join the YouTube community now. And आप में से बहुत लोग Patreon पे हमें like contribute नहीं कर पाते because you don't have a credit card, but on YouTube you can also contribute to us via debit card. And वहाँ पे हमारे same features हैं and like अलग अलग हमने categories बनाई हुई है, so you can also become a part of our WhatsApp group if you apply for one of the categories. And we also recently got a new patron member. Her name is Gargi Paigode, and like I want to thank her for contributing to us. And if you like our work, you can also contribute. And yes, hoping to see you guys next week. Thank you for watching.